हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को सरते एजुकेशन स्वागत। आज आम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उपर 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा 20 मिनिट्स भितर पूरा स्पीड रे करबा क्वेश्चन करबा आंसर करबा। ओके, फर्स्ट देखो द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू रो कोडा मोस्ट अफेक्टेड हेता है सिंपल जिनस पूरा एतरे किछि बुझिबार नै सबुडु बेसी अफेक्टेड हेता है मीन तेणु कर आंसर इज मीन। The most frequent value in the data set is called most frequent कोटा सेटा होचे मोड। most frequently हमें जो कोटा जानि परंती एटा मोड टा जानि परंती। the middle value in the order data set, the middle value of order data set कोटा एटा मीडियन हम कहबा। अब नेक्स्ट होचे the sum of deviation of all observation from the mean। sum of deviation हमें काहू कहती ऑलवेज जीरो वाला कहते ऑलवेज जोटा जीरो मझीरे जोटा जीरो रहा सम ऑफ डेविएशन आम कहती। यहाँ मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी which measure of central tendency is suitable for both numerical and categorical। both कोटा हमर suitable कोटा हम suitable हमर both suitable हम मोड हम जोटा दीटा जगह numerical categorical हम कर परिबा। next होची if the mean of a data set 25 and the median is 30 then the data is likely to कौन हम likely हम एटा हम positively skewed हम कौन पाई हम कारण देखो mean of a data set is 25 and median is 30 तेन करी एटा positive side को देखौची एटा positive ही हम। तापर 7 नंबर देखिबा the average of highest and lowest value in the data set is called average of highest data set is called mean median mode ना आउट कौन अच्छे हाँ मिड रेंज होगा एटा हम मिड रेंज होगा। ओके कौन होगा average of highest lowest value ना रेंज कथा कुछ तापर if the mean of a data set is 40 and the constant of 5 is added to the each observation the new mean केते हबो new mean हिजबो 45 कोन हिजबो mean ता सहज mean रे किछि असुविधा नै डायरेक्ट जदि आपण जहा भी ऐड करियो सेया ही हमें mean value ऐड कर दवा। 9 नंबर कोची if the mean of a data set is 30 and each observation is multiplied by 2 the new mean is केते हबो new mean ता केते हबो new mean हिजबो सी हिजबो 60 हिजबो 3 दुले 6 30 60 हिजबो। the interquartile range is measure of a central tendency dispersion। interquartile range हमें कोठे देखंती बी रे dispersion रे देखंती तेनु करी हमरो आंसर बी हिजबो। तापरे प्रॉपर्टी देखिबा which measures of central tendency is best suited highly skewed data highly skewed पे कोडा दरकार मीडियन दरकार। ओके तापरे नेक्स्ट देखो इन ए डाटा सेट which outlier कथा कहला which measure of central tendency more robust कोटा रहइबा एटा होची मीडियन रहइबा। more familiar कोटा रहइबा मीन रहइबा non familiar कोटा रहइबा मोड रहइबा। when dealing with ratio or rates which measure of central tendency is used। ratio सहित हम जतले काम करंती सेतले को सेंट्रल टेंडेंसी हम नै थांती सेटा को हम नै थांती ज्योमेट्रिक मीन को ही नै थांती सेतो का को नै थांती ज्योमेट्रिक मीन नेले हम रेशियो बात कर परिबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोची which measure of central tendency is most affected by the presence of open-ended classes। open-ended classes कोटा most affected हुए ता होची mean होची open-ended most affected हेता है। तापर in the frequency distribution the mode is value with the कोटा हबो highest lowest एटा हबो highest frequency हबो। in the frequency distribution the mode is valued with the highest frequency। the coefficient of variation is a measure of coefficient of variation बतला coefficient of variation is a measure of कोन हबो आंसर एटा होची relative dispersion हबो कोन हबो relative dispersion हबो। ओके नेक्स्ट देखो if the coefficient of variation is 20% and the mean is 50 the standard deviation is केते standard deviation केते हबो त कोन करबा standard deviation एटी हमर 10 हे जबो 10 हे जबो कारण the standard deviation can be found by the
multiplying coefficient variation and mean सहित हम जब coefficient variation को multiply करिवा हमर बाहरिबो standard deviation। तापर नेक्स्ट कहूची in a normal distribution approximately what percentage of data lies within one standard deviation of mean। बढ़िया क्वेश्चन टा आंसर कोन हबो ता होची 60% हबो कोन हबो 60%। सिंपल जिनसा फॉर्मूला टाइप रो मन रखिबो in a normal distribution approximately what percentage of data lies within one standard deviation of a mean। ओके एटा कोन हबो 68%। एटा को केतल पछरे बुझिबा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को नै के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भीतर कोन डिफरेंस रहउची ता हम ओटे पछरे बुझिबा ताको भलो वीडियो रे करिया। द z स्कोर मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ कोन हबो एटा हबो हमरो एटा हबो स्टैंडर्ड डेविएशन हबो कारण ये z स्कोर indicates how many standard deviation a data point is from the mean नहीं कि हमको z स्कोर कहूची how many standard deviation data point from its mean रो केते standard deviation अछि। the negative z score indicate that the data point is negative point कोन स्लो करिवो एटा अछि below the mean शो करिवो negative टा कोन शो करिवो below the mean शो करिवो a negative score the data point is below the mean ही होय। नेक्स्ट होची 21 if the mean of a data set is greater than the median the data is likely to कोन हबो एटा हबो positively skewed हबो कोन हबो positively skewed हबो। if the mean of a data set is greater than median नु जदि अधिक हेउची ताने एटा हबो positively skewed हबो। in a study of income distribution which measure of central tendency is most suitable to represent the typical income। in a study of income distribution measure of central tendency is most suitable for represent the typical income कोन हबो आंसर हबो median कोन हबो आंसर median हबो। नेक्स्ट when analyzing customer satisfaction rating on Likert scale which measure of central tendency is offer कोटा हबो एटा हबो हमर हबो से median ही हबो कोन हबो से median ही हबो। ओके Likert scale हम कोन यूज को मिड पॉइंट ना तेनु median हबो। तापर कला in a medical study investigation investigating the effectiveness of a new drug which measure of central tendency is commonly used to compare treatment of a group कोटा हम कर परिबा कोटा हम करबा एटा करबा मीन टा हम बेसिकली हम को जो कंपैरिजन पई हम ही यूज करता छी। when studying the age of onset of a data disease onset of a disease which measures of central tendency is most suitable एटा हमर कोन हबो एटा हबो median ही हिजबो एटा median हिजबो। ओके एटा हमर कोन हिजबो median हिजबो कारण median is less affected by extreme age and a positive कोन हो आउटलायर सहित ता आउटलायर द्वारा से अफेक्टेड होनी ना तेनु करी हमें एटा जो कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेटिंग कला बेले हम मीडियन को ही कर परिबा। ओके ना सॉरी कस्टमर सैटिस्फैक्शन कर देनी एज बेले जदी करतोंदी माने डिजीज व्हिच मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अपन मीडियन हबो कारण एटा जो आउटलायर सहित तार एते ये नथाय मान मीडियन बेले हम आउटलायर इन्फ्लुएंस करि पारंती ने तेनु करी आंसर इज मीडियन। तापर नेक्स्ट 26 which measure of central tendency is most affected by outliers simple दिन एटा मीन ऑलरेडी हम करछन। in a bimodal distribution which measure of central tendency is least representative bimodal distribution ने को जोटी दीटा मॉडल थिबो जे हमर आंसर कोन हबो सेटा हमर आंसर है जो मीन है जो कोन है जो मेजरशन लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट सब लास्ट कोड आसीबो मीन ही आसीबो। when dealing with is categorical data which measure of central tendency is most appropriate categorical data रा कोड appropriate होता है मोड होता है सिंपल दिन से एटा मन रखिबो। the choice of measure of central tendency depends on कोन हबो all of the above the shape of the distribution presence of outlier the research questions it is important to consider the limitation of each measure of a central tendency when interpreting data
कौन हम आंसर ट्रू हम ना फॉल्स हम एटा आमर ट्रू हो कौन हो ट्रू हो ओके it is important to consider the limitation of each measure of a central tendency when interpreting data eta true hobo am naba dakar which measure of central tendency is most resistant to the influence of outliers most resistance कोचा एटा होबो कोन होबो हमर मीडियन होबो माने सब दूरे के रहता है मीडियन रहता है ये डाटा सेट इज हाईली स्क्यूड टू द right आड़ को बेसिस skewed होइक अछि which measure of central tendency would be best represent the typical value कोटा हो आंसर एटा हो आंसर skew to right हो skew to right ना अछि हमर मीडियन ही हो skewed माने तो मीडियन हो if the mean of a data set is greater than the median what can you infer about the distribution of data कौन कर परियो मीन इज डाटा सेट ग्रेटर देन मीडियन माने मीन टा बड़ अछि माने पॉजिटिव स्क्यूड ही अछि त माने एटा हो स्क्यूड टू राइट हो कोन हो स्क्यूड टू राइट हो पॉजिटिव स्क्यूड अछि तेन करी स्क्यूड टू राइट हो फॉर व्हिच टाइप ऑफ डाटा इज द मोड मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड को कोठी मोस्ट एप्रोप्रिएट हिताय मोड हमर मोस्ट एप्रोप्रिएट हिताय कोठी हमर एठी प्राय तो कैटेगोरिकल डाटा ऊपर कैटेगोरिकल डाटा रे हमें मोड यूज करथन तेन कर आंसर है जो एटा कैटेगोरिकल डाटा हो आंसर नेक्स्ट देखो 35 a data set contains 100 values after calculating the mean it is discovered that one value was incorrectly recorded as 100 instead of 10 how will their error affected by mean निश्चित एटा अफेक्टेड हबो गोटे डाटा सेट अछि 100 टा वैल्यू अछि तादरे इनकरेक्टली 10 जगह हमें 100 लिखि दैछंती कोन करिवा एटी कोन करिवा ना एटी हमर आंसर भारियो कोन 9 ही भारियो कारण हम कोन करियो हम कोन करचंती 100 रे से कोन 90 टा 90 अधिक अछि नै कि 90 टा हमर बढ़ी जाईची तेनु करी हम एटी कोन करिवा हम एटी कोन करिवा ना जो वैल्यू ऑफ 90 को माने 10 को डिक्रीज करिवा द टोटल सम ऑफ बाय तो 90 रे डिक्रीज करिवा तो सो the measure of dispersion measure of mean कौन डिक्रीज करियो मीन डिक्रीज बाय कौन हो 90 जो जति हमर बॉडी को अछि से वैल्यूटा माने 90 बॉडी को अछि बाय केतरा हमर टोटल वैल्यू बाय 100 वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज केते 100 बॉडी छि केते 90 बाय 100 करतले हम बाहरिबो मीन बाहरिबो तेनु ता माने केते बाहरियो 0.9 बाहरियो ता माने 0.9 है कौन हम आंसर हमर आंसर इजबो इंक्रीज बाय 9 हला इंक्रीज बाय ना सॉरी एटा नै इंक्रीज बाय 9 हो माने 0.9 वाला ना 0.9 में केते बढ़ला 9 बढ़ला बोले हमें जानि पड़ले ओके ता माने नेक्स्ट देखिबा if the sum of a deviation of all values from the given value is 0 the value is most likely to mean median mode range कोटा हबो एटा हमर हबो एटा हबो हमर मीन ही हबो कोन हबो मीन हबो the sum of a deviation of all values from given value is 0 केतले पर मीन बेले ही 0 हे परियो मीडियन बेले केतले हमर 0 हुए ने नेक्स्ट 37 देखिबा ये डाटा सेट हैज मेन ऑफ 50 एंड 40 और डाटा सेट दीटा कोन अछि एटी मीन देछि मीडियन देछि मीन देला 50 और मीडियन देला 45 ताने कोन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू कोडा भीतर ट्रू हे परिबो एटा हमर ट्रू हबो the data is skewed to left data is skewed to right एटा data is skewed to right हबो कारण मीडियन ता सान अछि मीन ता बड़ अछि तेनु करी skewed to right हबो which of the measure of central tendency is most affected by presence of open-ended classes in the frequency एटा हम ऑलरेडी करितले बोधे एटा हबो मीन हबो आंसर मोस्ट अफेक्टेड हिता है open-ended classes रे मीन हिता है if the mean median mode of a data set are all equal what can you conclude about the shape of the distribution तुम कोनटा conclude करिवो राबो सिमेट्रिकल हो बोली हम भाबिया कोन मीन मीडियन मोड सब जन जतरे इक्वल ही जाउची सेटा हम डाटा सेट ता हमर कोन हिजबो सिमेट्रिकल हिजो ना लेफ्ट हो ना राइट हो ना कैन नॉट डिटरमाइन हमर
Okay, next देखो which measure of central tendency is most appropriate for the data set represent ratio or ratio rate को हम जो कोटा represent करते हैं ratio इटा already करथिले इटा होची इटा हमरो कोन हबो median हबो नहीं रेशियो मीन बाहर करबा ओके रेशियो बेले हम कोन मीन को नहीं कि हम रेशियो बाहर करी भी परिबा आ का को ज्योमेट्री मीन को नहीं परिबा आ मीन को नहीं परिबा ओके हार्मोनिक मीन ये data set contain a large number of outlier which measures of central tendency would be most robust in this case. Most robust कोटा इटा ऑलरेडी हमें कोठोड पढ़िथिले बोधे क्वेश्चन टा इटा ऑल ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हो इटा होची ऑल ऑफ द consider a data set with a bimodal distribution which measure of central tendency would best represent the data कौन हम आंसर हम मोड हम कौन हम आंसर आज मोड तापर नेक्स्ट देखो 43 कौन कहूँ डाटा सेट इज हेवीली स्क्यूड टू द लेफ्ट आड़ू स्क्यूड ओके व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अकम्पनी द मीडियन पाई कोटा को डिस्पर्सन टा बेस्ट कौन बेस्ट हम से कौन कहूँ इंटरक्वार्टाइल रेंज ही हम कौन कहूँ इंटरक्वार्टाइल रेंज हम इंटरक्वार्टाइल रेंज ही हम अब देखे फॉर ग्रुप डू डाटा व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन कोटा आंसर हम डायरेक्ट अज्यूम्ड स्टेप ऑल हम कौन ऑल हो व्हिच ग्रुप डाटा फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट मीन बेले तीनटा को हम कैलकुलेट करता हैं the data set has a mean of 75 and the standard deviation is 10 if we add 5 to each value in the data set what would be the new mean and standard deviation कौन हम हमर कौन केते ऐड करबा 75 अछि 10 अछि 75 और 10 को जदि ऐड करबा ताने कोन हिजबो इठी हम कोन करबा ना हमर 80 स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ थिला से रहिबो किंतु मीन रे हमर बढ़ी जो ता माने इटा हबो 80 हबो आंसर केते बढ़िले 5 बढ़िले सेति कि हमर कोन हमर किछि टोटल ऊपर किछि चेंजेस आसुनी ना तेनु करी मान एवरेज रे किछि चेंजेस आसुनी सेटा रहउची तेनु करी स्टैंडर्ड डेविएशन रे किछि चेंज हबोनी ता माने 5 ही हबो आंसर ना सॉरी कोन हला 80 और 10 ही हबो आंसर माने 75 रे 5 मिसी जिवो okay next देखिबा if the coefficient of variation of a data set is 20% mean है 50 what is the standard deviation कौन एटा कौन एटा very simple question टा एटा ई टाइप रो हमर क्वेश्चन बेस पर त हमन अब एटा कोन एटा अब हमर फर्स्ट इज 10 इज आंसर हम ऑलरेडी क्वेश्चन टा ऊपर करिथिले एटा कोन करियो 20% into 10 को into मल्टीप्लाई कर देना हमर बाहर जो which measure of central tendency is most affected by changes in the scale of measurement okay scale of measurement हम जानि चंती चारटा स्केल अछि हमरो कोड हबा आंसर हबा हमरो मीन हबा ओके चारटा को स्केल लो कोन ना अछि सेटा अपन माने कमेंट रे लिख परिबे a data set has a mean of 60 and a median is 55 if we square each value in the data set how will the mean and median change कोन हबा आंसर अब बोथ विल इंक्रीज ही जो हम जो कोन स्क्वायर को दो ना मीन या मीडियन को तण करी हमर सब जाक इंक्रीज ही जो the data set contain 100 values if we remove the largest and smallest value how will the mean and median change कोन हबो largest value और smallest value को हम कोन करचंती रिमूव कर दोचंती ओके रिमूव कर दोचंती ताने कोन हबो आंसर हबो हमर mean may or may not be changed median will be decrease it is sorry d is हमरो आंसर ओके कोन हबो mean may or may not be changed median will be changed ता माने नेक्स्ट देखिबा ये डाटा सेट फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन which measures of central tendency is equal to the variance of data set कोड हबा आंसर हे जो हमरो मीन हे जो ओके ये रहला 50 टा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम रे आपण मानको माने इजी क्वेश्चन जोरा कि हमरो एसएससी पीजीटी आउ
आउ एस ओपीसी पीजीटी हो किंबा हमर ओपीसी कौन एसएसबी लेक्चर ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଇ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ବେସିକ୍ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆମେ ହାର୍ଡ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।